बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। सबसे पहले है हमारे पास नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। नाउन किसी शख्स, चीज, जगह या आइडिया का नाम है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, एप्पल, मॉस्क, ब्रेन, आसिम, थॉट। These all are examples of noun. Second, we have pronoun. Pronouns replace the name of a person, place, thing or idea in a sentence. Pronoun किसी noun की जगह पर इस्तेमाल होता है। For example, he, she, it, we, they, him, her, this, that, etc. Third, we have is adjective. An adjective describes a noun or pronoun. Adjective noun या pronoun के बारे में मज़ीद मालूमात देता है, मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। For example, blue, tall, thin, long, short, red, beautiful, sour, sweet, etc. These all are examples of adjective. Next is verb. A verb is a word or group of words that describes an action or experience. Verb काम के होने को जाहिर करता है। For example, realize, walk, see, look, sing, sit, listen, etc. Next is adverb. An adverb tells how often, how, when, where. It can describe a verb, an adjective or an adverb. Adverb किसी verb, adjective या किसी और adverb को मज़ीद explain करता है। For example, loudly, always, never, late, soon, etc. Next we have is preposition. A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence. Preposition noun या pronoun की जगह सिमत या टाइम बताते हैं। For example, at, in, on, about, to, for, from, etc. Next we have is conjunction. Conjunctions join words or group of words in a sentence. Conjunction अल्फाज या अल्फाज के ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं। For example, and, because, yet, therefore, moreover, since, also, until, but, etc. वो अल्फाज जो दो sentences को आपस में जोड़ रहे होते हैं वो conjunction होते हैं। Next is interjection. Interjections express strong emotions and are often followed by an exclamation point. Interjection खुशी, गमी, हैरत में अचानक मुंह से निकलने वाले अल्फाज हैं। For example, bravo, well, hooray, yeah, oops, wow. जैसे कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लग रही है तो आप कहोगे wow, what a beautiful. Hope so अब parts of speech आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।